Pavani Mataji, thank you. Pavani Mataji, thank you. Hare Krishna. Thank you, Pavani Mataji. Thank you very much for the wonderful Kirtan. Sorry, Prabhuji already joined किया हुआ है, तो आप लोगों सबको धन्यवाद श्याम देश की तरफ से. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srutakirti Prabhuji, please accept our most humble obeisances at your lotus feet from all of us in Shamadesh. All praise to Divine Grace of Prabhupada. How are you keeping, Prabhuji? I'm okay. Okay. Are you back in Vrindavan? Are you back in Vrindavan? It's a very special place. Are you back in Vrindavan, Prabhuji? Yeah, I'm at Krishna Balaram Mandir here. Okay, great. Because they said that you had traveled last week, so I was wondering whether you had come back. Yeah, I had gone to Jain right. for a few days and then came back. So I've been staying in Vrindavan. Okay, so we are very fortunate to have your grace today. Very, really fortunate. For all of us in Shamadesh, it's a great blessing. And it's the first time you come. Give me a minute to introduce your grace. Yes. My devotees, we are very fortunate to have His Grace Srutakirti Prabhuji with us today, a very senior disciple of His Divine Grace Srila Prabhupada. And he's been in this moment from his early days. He was born in 1951 in Philadelphia, and he graduated from college in last early unit. And then he never looked back. He was into New Vrindavan, where we joined ISKCON. And then for nearly 3 years with Srila Prabhupada, he traveled 5 times around the globe as a personal servant. So he had the most 24 hours max time. We all know that we look for touching the lotus feet of the Divine Grace Srila Prabhupada at any time, given time. But Prabhu is fortunate to also take the blessings of the back and the head of Srila Prabhupada. He used to massage. So he's really fortunate. So we are very, very honored to have Prabhuji. He's also been the temple president in Honolulu, and also he has been running the Govindas for many years at different places. An excellent preacher worldwide. Very, very, can say compassionate. Whenever I meet him in Vrindavan, he's so kind to give his mercy. And I know him from my childhood days also in Jew. So thank you, Prabhuji, for joining. And we'd like to welcome you with a big Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Prabhuji, I would like Hemanga Prabhuji to just translate in Hindi quickly for the introduction also for the Hindi speaking, and then. Okay. तो जो पूजनीय श्रुतकीर्ति प्रभु श्रील प्रभुपाद के बहुत बड़े शिष्यों में से हैं, और ये बहुत ही पहले इन्होंने आंदोलन में सम्मिलित हुए और उनके बहुत अच्छा प्रचार करते हैं. गोविंदा रेस्टोरेंट होनोलुलु वगैरह में वहां पे चलाया, बहुत सारा इन्होंने प्रचार किया और बहुत ज्यादा कृपा है इनके पास प्रभुपाद की. और 5 बार इन्होंने पूरे विश्व का वो प्रभुपाद के साथ में ये पूरा दौरा किया हुआ है. और दूसरा ये है कि इनका स्पेशल ये है कि विशेषता है कि प्रभुपाद का पूरे शरीर के मालिश करते से सब जगह से कृपा इनको मिला है प्रभुपाद का, है ना. इनके चरणों का भी कृपा मिला है, सर से लेकर नीचे तक सभी जगह से कृपा मिला हुआ प्रभुपाद का इनका. तो हम उनके लिए बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं. प्रभुपाद प्रभु जी बहुत ज्यादा करुणामयी हैं. तो जब भी जैसे राधा बाबू बता रहे हैं, जब भी वृंदावन जाते थे तो उनको, है ना, वृंदावन में वो काफी अच्छे ढंग से उनको मतलब स्वागत करते थे उनका. और काफी उनका वो मतलब बात करने से लगता है उनके बहुत करुणा है उनमें, इसलिए बहुत अच्छा प्रचार भी करते हैं, बहुत अच्छे प्रचारक है. बहुत अच्छे गोविंदा रेस्टोरेंट उन्होंने चलाने का जो उत्तरदायित्व तो अच्छे ढंग से निभाया है इन्होंने, और कई जगह पे चलाया उन्होंने. हरे कृष्णा. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Namo Vishnaya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachani Nir Visesa Sanghavari Pasapani Panchakopatirubhishta Kripa Sindhu Deva Chapatitana Pavani Bhya Vaishnavi Bhyo Namaha. Hare Krishna. So first I'd like to just say thank you for allowing me to be with you all this morning. I see there's very nice group of devotees here this morning. तो मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और मैं अपना आभार भी इसके साथ साथ व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे भक्तों के बीच में मुझे आज आने का आपने जो आमंत्रित किया, आपने अवसर दिया है मुझे आप सबको बीच में उपस्थित रहने का, और मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ. हरे कृष्णा. And
I've been, of course, for several months now doing these Zoom classes, but I still find it a little bit difficult doing classes on Zoom. मैं अच्छा कुछ महीनों से मैं ये जो जूम का जो कक्षा है मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा कभी इसमें कठिनाई का अनुभव करता हूँ मैं. So much of what we do in Krishna consciousness is dependent on good association. तो कृष्ण भावना में क्या करते हैं हम लोग है ना, अच्छा संग के लिए हमेशा हम निर्भरता हमारी रहती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए. So it's even speaking in this way, it's always nice to be able to see the devotees on the screen as they're appreciating to hear about Srila Prabhupada. तो इससे बहुत अच्छा भी लगता है ऐसा कि जो पर्दे पे हम सब भक्तों को देखते हैं कि जो कि श्रील प्रभुपाद के बारे में श्रवण करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है. And it was also very nice to see this morning Mataji doing kirtan and doing bhajan at her house. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई माता जी है ना अपने घर में कीर्तन करिए, भजन कर रही है, और बहुत अच्छा लगा मुझे. And whole family chanting together. पूरा परिवार सब मिलके जपा कर रहा है. This of course is what Prabhupada very much wanted as he traveled around the world. एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ये चाहते थे ऐसा होना चाहिए जैसा आप लोग कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने पूरे विश्व में इन्होंने उसका भ्रमण किया. He was always being asked by his disciples sometimes about whether one needs to live in the temple, if one can live outside of the temple. वो हमेशा चाहते थे अपने शिष्यों के से भी यही बोलते थे कि कोई वो मंदिर में रहे या मंदिर के बाहर है, उसको ये सब जो भक्ति है वो करते रहना चाहिए उसको. And I remember from the very first time I met Srila Prabhupada is when I received my first initiation. तो मैंने उस टाइम में भी अनुभव किया जब मैंने पहला दीक्षा लिया, श्रील प्रभुपाद से मिला था, उनसे मैंने दीक्षा लिया था. So that was in July of 1971. मैंने जुलाई 1971 में प्रभुपाद से मैंने दीक्षा लिया था, तब की बात है. And at that time I had been living in the temple just for 3 months. तब मैं मंदिर में 3 महीने के लिए रहा था तब. And we traveled to New York City where Prabhupada every day he was initiating 10 devotees each day. और हम अलग-अलग शहरों में जाते हैं जहाँ पे श्रील प्रभुपाद प्रत्येक दिन 10 लोगों को दीक्षा देते थे. So he did this for over 1 week. और 1 हफ्ते तक लगातार उन्होंने यात्रा करते रहा और जहाँ जाते थे वहां पे 10 लोगों को दीक्षा देते थे वो. At that time, initiating 10 devotees a day for a week, that were many devotees. That was almost 100 devotees. तो उस टाइम में हर हफ्ते में मतलब एक दिन में 10, तो हफ्ते में कितने सारे भक्त धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे थे तब. And I remember we were sitting in the temple room, over 100 devotees, and Prabhupada, he was speaking from the Vyasasan. और मुझे एक दृश्य याद है अभी भी कि जब श्रील प्रभुपाद अपने व्यासासन पे बैठ के करीब 100 भक्त वहां पे एकत्रित हुए थे, उनसे प्रवचन कर रहे थे उनको. The temple at that time was in a place on Henry Street in New York City, Brooklyn, New York. तो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हेनरी शहर में है ना वो मंदिर था उस समय में. And it was just one of many houses in a row. It was in the middle of the block, so there were houses all on each side, row home. तो ये एक लाइन से एक पंक्तिबद्ध जो घर रहते हैं पंक्ति में, वो पंक्तिबद्ध घर थे और उसके बीच में हमारा मंदिर था. दोनों साइड में पंक्तियां थी घरों की. And it was a narrow house, but it was 5 stories high. और उसमें एक जो है बहुत ही एकदम सकरा घर था, लेकिन वो 5 माला था. वो सकरा घर था, एकदम कम उसका क्षेत्रफल था. So the other houses were exactly the same as the temple. तो हमारा जो था घर, वो भी जैसे मंदिर का भी ऐसा ही घर था हमारा, जहाँ मंदिर बना था.
Prabhupada, he was giving Srimad Bhagavatam class. और शिला प्रभुपाद भागवतम कक्षा दे रहे थे. And of course, up in the front of the temple room on the altar were Radha Govinda. और वो जो वहां पे अल्टर में है ना, जो मंदिर था छोटा सा बना था, उसमें राधा गोविंद का अर्च वगैरह था. And Prabhupada said, what is the difference, he said, between this house and the house next door? तो शिला प्रभुपाद ने पूछा कि ये घर जो है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा है, ये जहाँ पे रह रहे हैं हम लोग, और पास में जो घर है, इन दोनों में क्या अंतर है? He said, all the houses here are the same. He said, but what is the difference? तो शिला प्रभुपाद ने बोला जितने भी घर है वो सब सेम ही है, सेम दिखते हैं सब, लेकिन फर्क क्या है? He said, this house is Krishna's house. तो उन्होंने बोला ये जो घर है ये कृष्णा का घर है. He said, and here in this house, everything we do, we're doing for Krishna. इस घर में हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं. So always from the beginning, he was teaching us how to be Krishna conscious in every situation. तो आरंभ से ही हमें यही शिक्षा देते थे हमेशा कि हम कैसे सभी परिस्थितियों में कैसे कृष्ण भावना भावित रहे हम लोग. So I'm saying this because I see very nice family chanting together. So their home is a temple. तो इसलिए मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि जैसे बहुत अच्छा परिवार है, बैठ के पूरा परिवार जपा कर रहा है, तो उनका घर नहीं, वो तो भगवान का मंदिर है वो तो. So this is always the training that Srila Prabhupada gave us to make our home a temple. तो जैसे शिला प्रभुपाद हमें जो दिया है कि हमें वही हम पालन कर रहे हैं और पालन करते रहना चाहिए कि हमारा हर घर को हमें मंदिर बनाना है. So just like in the temple, in the home, we worship the deity, we do Tulsi Seva. जैसे घर में हम अच्छे वगैरह की पूजा करते हैं, तुलसी का पूजा करते हैं. Everything that we cook, we're preparing for the deities, to give to the deities. हम जो भी कुछ हम जो रसोई में बनाते हैं वो भी हम जो अच्छे वगैरह उसको खिलाते हैं हम. So there's no limitation for anyone that wants to be a devotee. Simply. तो इसलिए इसमें कोई सीमा ही नहीं, कोई भी भक्त बन सकता है देखा जाए तो. So just like when we traveled with Prabhupada, as you say, I traveled with Prabhupada. I went around the world 4 times with Srila Prabhupada. तो जैसे कि हमने बताया कि मैं श्रील प्रभुपाद के साथ हमेशा यात्रा करता था, तो मैं पूरे जगत का, पूरे विश्व का हमारा ये 4 बार मैंने उनके साथ में यात्रा की. Of course, we were on many planes traveling from one city to the next. बहुत सारे जहाज होते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर में हमको लेके जाते हैं, बहुत सारे से जहाज हैं. And one of the main things whenever we would travel on a plane is we would always bring bag of prasadam. और एक हमारा विशेषता थी श्रील प्रभुपाद ने कि हम लोग जब भी किसी जहाज में जब यात्रा करते थे, हवाई जहाज में, तो हमारे साथ पूरा एक झोला भर के है ना प्रसाद लेके आते थे. I always say how much Prabhupada liked prasadam. प्रभुपाद है ना हमेशा प्रसाद उनको बहुत पसंद था. So as soon as class was over in the morning, Prabhupada would have his breakfast. तो जैसे ही जो कक्षा जब उनका प्रवचन खत्म होता था, प्रभुपाद अपना नाश्ता करते थे. So and if we were traveling, we always had to make sure that Mataji's, they always prepared some nice food stuff. तो जब भी हम यात्रा कर रहे होते थे तो हम ये पहले ही हम प्लानिंग कर लेते थे कि जितनी माता जी हैं वो एक अच्छा प्रसाद बना के दे दें हमको. So generally when we would be on the plane, there would be puris, nice potato sabji, dry sabji. तो जब भी हम यात्रा करते थे हवाई जहाज में, तो पूरी बहुत अच्छी पूरी बनी हुई और बहुत अच्छी आलू की सब्जी और भी दूसरी कोई सूखा सब्जी साथ में लेके जाते थे. And of course we could have pakora, kachori, like that. और उसके साथ साथ पकौड़ा, कचौरी ये भी साथ में हम लेके जाते थे. And when I traveled with Prabhupada in 1973, when we were on the airplane, they were also serving vegetarian meals.
मुझे याद है जब 1977 में मैं शिला प्रभुपाद के साथ यात्रा कर रहा था हवाई जहाज में, तो उस टाइम में पूरा जो शाकाहारी जो खाना दे रहे थे सबको उसमें। So sometimes if it was Air India like that, we would also put the vegetarian meals on the table. तो इसके लिए जब एयर इंडिया से जब हम कभी कभी सफर यात्रा कर रहे होते थे, तो हम टेबल के ऊपर जो शाकाहारी खाना वो लगवाते थे। And then of course I would put Prabhupada's puri, sabji next to him. तो उसके बाद मैं प्रभुपाद को है ना, हम जो घर से लेके आते थे वो पूरी और सब्जी वो भी हम उसके साथ में लगते थे हम लोग। So of course I traveled with Prabhupada for a very long time. तो इसलिए मैं प्रभुपाद के साथ मैं बहुत बार यात्रा किया मैंने। So this one day when we're on the airplane and I put the puri and sabji down, and then the person brought the plates and we had the vegetarian trays in front of us. इसलिए हम लोग है ना, फिर जब एक बार हवाई जहाज में थे तो पूरी और जितने भी शाकाहारी है वो सब हमने वहां पे सब रखा, सब चीज वहीं पे टेबल पे प्लेन के अंदर ही। Of course, I was brought up in the West, so I'm looking at this plate of vegetarian meal in front of me. क्योंकि मैं है ना पश्चिम में मेरा जन्म हुआ है, तो इसलिए मैं चाहता था कि मेरे सामने प्लेट हमेशा शाकाहारी भोजन का हो। And on the plate there's a dinner roll with butter next to it. तो वहां पे एक रोल रखा हुआ था और लेकिन उसके साइड में भी मक्खन भी रखा हुआ था। So Prabhupada's sitting next to me. He's breaking off a piece of puri. He's putting it into the sabji. He's taking prasadam. तो है ना प्रभुपाद मेरे बगल में बैठ के जो पूरी के साथ में सब्जी को लगा के और प्रसाद ले रहे थे वो। And I'm sitting next to him and I'm looking at the dinner roll. So I open the dinner roll, I put butter on the roll and I start eating the dinner roll. तो वहां पे जो डिनर जो रोल था उसको मैंने उसमें मक्खन लगाया और मैंने खाने लगा वो। I'm not even thinking about Prabhupada sitting right next to me as I'm eating this roll. तो मेरे को मन में विचार भी नहीं आ रहा था कि मेरे पास में श्रील प्रभुपाद बैठे और मैं अपने मुंह में ये डिनर रोल डालते जा रहा हूँ मैं। And as I'm eating, Prabhupada, he looks at me. और मैं जैसे खा रहा था प्रभुपाद हमारी तरफ देखा। He said, "How can you eat that dry roll?" उन्होंने बोला तुम कैसे ये सूखा ये जो रोल है ये कैसे आप खा सकते हो आप? He said, "We have these nice puris fried in ghee." He said, "And you're eating this dry piece of bread." तो उन्होंने बोला कि मैं देखो इतना अच्छा घी में बना हुआ पूड़ी है, उसके साथ सब्जी है और तो मैंने सूखा ये जो है ना आटे का बना हुआ कुछ खा रहे हो तुम सूखा वो भी। So Prabhupada continued to eat the puri sabji and I'm eating the dinner roll next to Prabhupada. और प्रभुपाद अपनी पूरी सब्जी खाते जा रहा है तो मैं जो डिनर रोल है जो आटे का बना हुआ है वो मैं खाते जा रहा हूँ। Prabhupada did not understand our Western habits. तो प्रभुपाद लेकिन उनको हमारी जो पश्चिमी लोगों की जो आदत है वो उसको समझ नहीं पाए शायद प्रभुपाद। I also ate Prabhupada's dinner roll. तो मैंने एक जो डिनर रोल वो प्रभुपाद को भी दिया मैंने। So then there was another day where same thing, we're on the flight. और दूसरे दिन जब जहाज से जब यात्रा कर फिर भी यही चीज फिर मिला हमको, फिर भी सेम चीज मिला फिर। And you know Prabhupada, he always sat by the window and then I would sit next to him. और शिला प्रभुपाद तो हमेशा खिड़की के पास वाली सीट पे बैठते थे, उसके बाजू में फिर मैं बैठता था। So again I have bag of prasadam, tiffin, puri, sabji. तो फिर मेरे पास पूड़ी था, अलग अलग विभिन्न प्रकार की सब्जी, सूखा सब्जी था, वो सब मैंने उनके टेबल पे मैंने उनको परोस दिया। So what we would do, of course, we give Prabhupada his prasadam, and then once Prabhupada was eating, he would tell us also take prasadam.
तो हम पहले शिला प्रभुपाद को हम परोसते थे, इसके बाद शिला प्रभुपाद खाने के बाद फिर हमको दे देते थे, चलो आप लोग भी खाइए। And as he's breaking off a piece of puri, grabbing some sabji and taking. इसके बाद शिला प्रभुपाद जो वही हमें देखा कि वो पूरी में से एक टुकड़ा तोड़ते थे, फिर सब्जी में लगाते थे, फिर वो खाते थे। And he looks at me and he starts laughing as he's taking prasadam. He's laughing and laughing. और इसके बाद वो हमारी तरफ देख के फिर है ना प्रसाद भी खा रहे थे और जोर-जोर से हंसते भी जा रहे थे, प्रसाद भी खाते जा रहे थे। He was remembering his childhood. वो एक्चुअली अपने बचपना उनको याद आ गया। And as he's eating the puri, he said, when I was a young boy, I could never eat chapatis. तो वो है ना बोले कि मैं जब छोटा बच्चा था तब मैंने बचपन में मैंने कभी भी मैंने है ना चपाती नहीं खाया मैंने। He said, I always had to have puris. मैं हमेशा पूरी ही खाता था मैं बचपन से ही। He said, I never would even try a chapati. He said, I would not eat chapatis. मैंने कभी मतलब प्रयास भी नहीं किया चपाती खाने का, मैंने कभी प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया, प्रयास खाई नहीं मैंने चपाती कभी। He said, so all the way until even I was an adult, I was a grahasta, still I wouldn't eat chapatis. जबकि मैं पूरा जीवन भर गृहस्थ ही रहा मैं ज्यादातर समय, लेकिन फिर भी मैंने चपाती कभी नहीं खाया। He's sitting next to me on the plane and he's telling me this story about how much he didn't like chapati. और हवाई जहाज में मेरे पास वाले सीट पे बैठ के हमेशा वही चपाती के बारे में मुझे बता रहे थे वो कि उसको कभी पसंद नहीं था चपाती। He never had one, but still he didn't like them. Without having it, he said, I don't like them. उन्होंने कभी खाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी बोलते थे कि मेरे को चपाती अच्छा नहीं लगता था। And he's saying sometimes it made very difficult for me. इसलिए बोलते थे कभी-कभी मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता था चपाती खाने के लिए। Because he said sometimes as an adult, he said we would be invited to people's houses to come and take prasadam. तो कभी-कभी क्योंकि ऐसा होता है कि क्योंकि कुछ-कुछ जगहों पे हमें कुछ लोग आमंत्रित करते थे और प्रसाद के लिए आमंत्रित करते थे वो। He said, and sometimes they would be serving chapatis. कभी-कभी वो चपाती मुझे देते थे खाने के लिए। He said, but I couldn't eat them. लेकिन मैं खा नहीं सका चपाती वो। And he was saying, the guests sometimes, he said, what would they think? You're too good for our chapatis? You won't eat our chapatis? What is wrong with you? तो इसलिए उनको लगता था कभी-कभी जो जिनके घर में हम गए हैं मेजमान हैं, उनको कैसे मन होगा कि अरे क्या ये चपाती हमने बनाया है, क्या अच्छा नहीं लगा उनको चपाती क्यों नहीं खा रहे हैं, उनको थोड़ा बुरा लगेगा। So this would, Prabhupada, he would tell a story. He would be all the different people. He would speak like the different people. And he would say, oh, you're too good. You won't eat our chapatis. तो वो हमेशा अलग-अलग लोगों से जब चर्चा कर रहे होते तो कभी भी बोलते थे कि हाँ बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा चपाती खाते बहुत अच्छा है, ऐसा बोलते थे। So he said it was a big dilemma how to take prasadam but not take chapati from these people. He said it was very difficult. इसलिए मेरे लिए मुश्किल होता था कि वो लोगों ने मेरे को परोस दिया चपाती परोस देते, मैं नहीं खाता चपाती, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा वो अटपटा लगता था कि ऐसे उन्होंने दिया मेरे को चपाती, मैं खा नहीं रहा हूँ। लेकिन as he was telling the story, he was laughing and laughing. He was having such a good time remembering how he would never eat chapati. ऐसा जैसे ये बता रहे थे, सब चर्चा कर रहे थे चपाती के बारे में, तो वो हंस भी रहे थे और ये बता भी रहे थे बार-बार कि मैं कभी चपाती खाई नहीं कभी मैंने जिंदगी में। He said, but during that time as a grahasta, he said, I had one servant. तो बोलते हैं जब हम गृहस्थ थे तब हमारे पास एक सेवक था तब। He said, and he would cook. और वो है ना हमारे लिए बनाता था। And he said, my servant kept saying to me, let me make you chapati. तो कभी-कभी वो जो खाना बनाने वाला मेरे को बोलता है मैं ना आपके लिए चपाती बना रहा हूँ। He said, I'll make you a chapati so good. He said, you're going to like it, he said. उन्होंने बोला मैं आपके लिए ऐसा चपाती बनाऊंगा कि आपको सही में बहुत पसंद आएगा, बस खा के देखो आप एक बार। He said, but I kept refusing. No chapatis, puris, only puris.
तो वह हमेशा यही बोलता था, नहीं नहीं नहीं, मना कर देता था, नहीं नहीं मेरे को चपाती मुझे से पूरी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। He said, but he kept asking, please let me make you chapati. He said, it's so good. He said, you'll eat this chapati. He said, then you'll always want chapati. तो इसलिए एक बार अगर आपने बैठ के चपाती खा लिया मेरे हाथ के, तो आप हमेशा फिर चपाती ही पूछते रहेंगे आप। All of this he's saying while we're sitting on the airplane taking prasadam. He's remembering so many years before. तो इसलिए जो जब भी हम वहां पे जहाज में जब रहते तो ये सब चीजें बैठ के सब हमको अपना प्रसाद भी लेते जाते थे, और ये पूरी जितनी भी जो है घटनाएं हमको बताते रहते थे। Then finally he said to his servant, he said, okay, go ahead, make chapati. I'll try chapati. तो इसके बारे में वो अपने सेवक को बोला कि जाओ आप अपना ना चपाती बनाओ जाके। So of course the servant made him his lunch. He made chapatis. Prabhupada had chapati for the first time. तो उनके सेवक ने जब चपाती बना के लेके आया तो पहला बार ऐसा हुआ था कि जब प्रभुपाद ने है ना चपाती खाया। So he said he made first class chapatis. और उन्होंने बोला इतना अच्छा उन्होंने चपाती बनाया, एकदम नंबर 1 चपाती बनाया था उन्होंने। So I cook for Prabhupada every day. I cook Prabhupada's lunch. और मैं ना प्रभुपाद के लिए प्रतिदिन मैं ना उनके लिए लंच बनाता था मैं। So every day for his lunch, Prabhupada had rice, dal, sabjis, and chapatis. Every day he had chapatis. तो इसके बाद फिर ना शिला प्रभुपाद ने है ना उनके जो लंच में जब प्लेट में उनको परोसता था उसमें चावल रहता था, दाल रहती थी, सब्जी रहती थी और चपाती भी जरूर रहती थी, चपाती हमेशा रहती थी। So Prabhupada was very particular. लेकिन प्रभुपाद है ना बहुत ही विशेष था एक्चुअली, हर चीज में हर चीज के बारे में कुछ विशेष उनमें विशेषता रहती थी उनकी। So when I would bring Prabhupada's lunch into the room, of course I bring it into the room, put it on a little table, and Prabhupada would sit on the straw mat on the floor. तो मैं जब भी खाता, जब मैं लंच लेके आता था तो मैं छोटी सी एक टेबल थी उसके ऊपर मैं अपनी प्लेट लाके रखता था और प्रभुपाद नीचे है ना एक घास की बनी हुई मैट है तो उसके ऊपर बैठ जाते थे। So of course the first thing Prabhupada would do would grab the chapati and break off a piece of chapati. तो पहला चीज जो प्रभुपाद क्या करते थे कि जो चपाती है उनके है ना अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कर देते थे चपाती को। So if there was Corella there, bitter melon, he would have little bitter melon and chapati. But you only brought him one chapati, not two chapati, not three, one chapati. और लेकिन वो एक ही चपाती खाते थे और थोड़ा सा जो कड़वा चीज साथ में खाते थे उनके। So as soon as I would put the plate down, offer obeisances, I would have to run back out of the room and make another chapati. तो इसलिए मैं फिर वो प्लेट उनको परोसने के बाद जब वो खाना आरंभ करते थे मैं अपना दंड प्रणाम करता था उनके, उसके बाद मैं दूसरा जाके जो काम है जो खाना वगैरह बनाने का वो मैं उस पर व्यस्त हो जाता था। So because by the time Prabhupada's finished the first chapati, second chapati must be there. तो मैं गया था चपाती बनाने के, क्योंकि एक चपाती जैसे ही वो खलास करेंगे तो मैं दूसरी चपाती मैं लेके आऊंगा उसके बाद। So as his servant, this was part of my ecstasy, was going back and forth, one chapati, two chapati, three chapati, four chapatis. तो मैं सेवक के रूप में मुझे बहुत आनंद आता था, बहुत मैं से बहुत ही भाव विभोर हो जाता था कि मेरे को बार बार मैं लेके आता था चपाती, एक चपाती, 2, 3, 4, और लेकिन मुझे अंदर बहुत आनंद की अनुभूति होती थी मुझे। And you know, in this time, everyone, our business is to be humble. और आपको मालूम है हमारे कृष्ण भावनामृत में हमारा जो मुख्य जो धंधा है वो है हम्बल होना, नम्र होना। Everybody, devotee means humble. तो डेवोटी का मतलब ही होता है नम्र होना। But the chapatis, they had to be puffed up. लेकिन आप चपाती देखेंगे पूरा फुला हुआ रहता है वो। So when you brought Prabhupada chapati, you always had to be puffed up. तो इसलिए जब भी आप देखेंगे कि वो पूरा सब फुला हुआ रहता था चपाती, तो ऐसा चपाती को जब भी हम उसके पास देखते फुला हुआ रहता था।
he had a servant, one servant for a short time. He had trouble making chapatis. तो उनके पास थोड़े समय के लिए एक सेवक आया था और वो उसको थोड़ा चपाती बनाने में थोड़ा मुश्किल होता था. So you know, if chapati doesn't puff up, it becomes very hard, like a cracker. इसलिए अगर मान लो अगर चपाती अगर वो फूलती नहीं है तो बहुत मतलब वो थोड़ा सा कठोर हो जाती, थोड़ी सी मतलब इतना नरम नहीं रह पाती, वो तोड़ना पड़ता उसको. You brought chapati like that, Prabhupada would just. तो वो जब चपाती लेके आए प्रभुपाद ने एकदम बाजू में दिया उसको, चपाती को बाजू में डाल दिया उसको. So Prabhupada was sitting there the whole time talking about chapatis, how wonderful chapatis are. तो जब भी प्रभुपाद फिर बाद में चपाती के बारे में चर्चा करते हैं, कितना बढ़िया चपाती, कितना अच्छा लग रहा है चपाती, ऐसे बोलते थे हमेशा. So of course this was always one of the very exciting parts was to fly with Prabhupada, watch him taking prasadam. तो ये बहुत अच्छा मेरे लिए एक मतलब जो प्रभुपाद के साथ में जो मेरी जो घटना घटी रही कि हमेशा उनके साथ में जाता था और साथ में बैठ के हम लोग खाते थे, लंच वगैरह खाते थे. So one time Prabhupada, he was flying to Australia. एक बार है ना श्रील प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ है ना जा रहे थे. And we had flown from Mumbai to Sydney. It was 14 hours. मुंबई से चले थे और हमारी जो यात्रा 14 घंटे की थी ऑस्ट्रेलिया तक की. And when we got to Sydney, we had to wait in the gate, the transfer gate. तो इसके बाद जब से हम सिडनी में वहां पे पहुंचे तो हमारा जो फिर है ना जो एक स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह अभी जाने का हुआ हमारा. So arrangements were made. Mudad visa, he would come to the airport and he was going to bring Prabhupada plate of prasadam. तो उस टाइम में ये हमारा जो व्यवस्था की गई थी कि प्रभुपाद के पास जो भी आएगा तो एक पूरा भरा हुआ एक प्लेट का प्रसाद का लेके आएगा प्रभुपाद को देने के लिए. So we got to the terminal and we're there 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. No Mudad visas bringing the prasadam. तो क्या हुआ उस बार ऐसा हो गया काफी समय हो रहा, 5, 10, 15, 20 मिनट भी हो गए लेकिन कोई प्रसाद लेके नहीं आ रहा, हम इंतजार कर रहे थे. So Prabhupada's very upset saying, where is Mudad visa? Where's the prasadam? तो माता जो लाने वाली थी वो कहाँ है, किधर है वो प्रसाद लाने वाली थी, किधर है प्रसाद. तो काफी प्रभुपाद नाराज हो रहे थे. So then, just as they're about to announce that we have to get back on the airplane, Mudad visa comes into the airport to the gate and he has a plate of prasadam. He has the deity plate, silver plates. तो उसके बाद थोड़ा हमने देखा कि थोड़ी देर के बाद वो जो माता जी वो प्रसाद लेके आई थी और जो अक्षय विग्रह ऐसा लग रहा है जैसे अक्षय विग्रह की प्लेट है, शायद ऐसा लग रहा. And he's apologizing to saying, Prabhupada, they wouldn't let me come into the airport. I had to go through so many things just to get here now, he said, but they wouldn't let me in. I'm so sorry. वो श्रील प्रभुपाद से बोले, प्रभुपाद मैं माफी चाहती हूँ, मुझे ना अंदर आने नहीं दे रहे थे, एयरपोर्ट के अंदर घुसने नहीं देते, मालूम है कहाँ से इधर से गुजरना उधर से गुजरना, इसका चेकिंग करना वो चेकिंग, इसलिए मैं लेट हो गई. And Madhavis is standing there with this beautiful silver thali, and there's halava, there's puris, there's fruits, there's yogurt, everything is there from the deity offerings. Sweets are there. तो जो उन्होंने अक्षय विग्रह को जो भोग लगाया उसमें बहुत सारे आइटम थे, चपाती थी, सब्जी थी, पूरी थी, मिठाइयाँ थी, उसमें अलग अलग टाइप का उसमें फल थे, सब कुछ था उसमें. And they're announcing that we have to go on the airplane. So Prabhupada said, okay, he said to me, you take the plate, we'll bring it onto the plane. तो जब वहां पे जब प्रसारित हुआ, सूचना प्रसारित की गई, बस अभी समय हो चुका है जहाज में अंदर जाके बैठने का, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, जो भी आप प्रसाद साथ में लेके आओ, मुझे प्रभुपाद ने बोला. So this was just going to be a 2-hour flight to Melbourne, and it was in first class. Prabhupada had first class seats.
तो ये मेलबोर्न के लिए जो है ना दूसरी एक हमारी एक फ्लाइट थी जो 2 घंटे का रास्ता था. So when we entered the plane, of course, then there's the flight attendants, stewardesses there, taking our coats, telling us where you can sit down. So we sat down right in the very front of the plane. इसलिए हम वहाँ पे जब वहाँ पे गए तो जितनी वहाँ पे जो प्रचारिका थी जो वहाँ पे सेवा करने वाली थी जो भी जिनका वहाँ पे ड्यूटी था उन्होंने हमसे कोट वगैरह लेके और सबको बता रहे थे आपको इधर बैठिए सबका व्यवस्था कर रही थी बिठाने के लिए. So people are boarding the plane and I put the plate right in front of Prabhupada, right on his table. और तो धीरे-धीरे करके सब लोग अंदर आ रहे थे जहाज में और मैंने फिर तुरंत ही मैंने प्लेट निकाली प्रसाद की और प्रभुपाद के सामने रख दी प्रसाद खिलाने के लिए उनको. Prabhupada hadn't eaten yet today, so immediately Prabhupada starts taking prasadam. क्योंकि प्रभुपाद ने सवेरे से कुछ खाया नहीं था इसलिए जैसे ही प्लेट सामने रखा एकदम खाना चालू कर दिया प्रसाद उन्होंने तुरंत. And maybe because we were in first class section, no one said anything. They just let Prabhupada, he's very happily eating fruits. He's got a glass of juice in front of him. तो इसलिए क्योंकि हम वहाँ पे जो प्रथम उसमें क्लास में थे फर्स्ट क्लास में थे इसके लिए है ना हमें कोई कुछ नहीं बोल रहा था. हमने बहुत सारे जो आइटम वहाँ पे प्रभुपाद बैठ के खा रहे थे लेकिन कोई कुछ भी उसमें किसी कोई आपत्ति नहीं कर रहा था. So now everyone is seated, putting our seatbelts on, and the plane starts going down the runway. And Prabhupada, he's just taking prasadam. तो हम अभी जस्ट जब समय हो गया जहाज अपने निर्धारित समय पे उड़ने लगा है ना तो लेकिन प्रभुपाद आराम से बैठ के प्रसाद खा रहे थे. And the plane's going down the runway faster and faster. I'm holding the glass of water. I'm holding the glass of orange juice so they don't fall over. And Prabhupada, he's taking prasadam. तो क्योंकि नीचे रनवे के ऊपर जहाँ पे रोड था रोड के ऊपर पहले जैसे दौड़ाते हैं उसको दौड़ा रहे थे उसको जहाज को तो जहाज जब दौड़ रहा था रोड के तो उसमें बहुत सारे झटके आ रहे थे तो इसलिए मुझे डर लगा तो मैंने फिर पानी और जूस गिर नहीं जाए झटकों के कारण तो मैंने पानी और जूस हाथ में ले लिया लेकिन प्रभुपाद आराम से बैठ के अपने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे थे. We say Prabhupada, he was transcendental from the spiritual world. इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद है वो एक्चुअली दिव्य थे और दिव्य जगत से आए थे वो. But you would see there was literally no limit to what that meant to be transcendental. He was completely indifferent. Everything that was happening around, and he's honoring prasadam. आप देखेंगे ये है ना जो भी कुछ हो रहा था आसपास में उससे बिल्कुल अनभिज्ञ थे जैसे क्या हो रहा क्या नहीं उसके मतलब नहीं कोई लेना देना नहीं था. ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे रहते हुए उससे जैसे उनका जो हर चीज है ना वो दिव्य जगत में हो रही थी उनकी मतलब वो ऐसा लग रहा था उनको जैसे वो दिव्य जगत में बैठे हुए थे वहीं पे प्रसाद ग्रहण कर रहे थे. So now, of course, the plane is in the sky flying. Prabhupada's finished. He looks at me, said, "Okay, you can take." तो अभी सब है ना ऊपर जहाज उड़ने लगा आकाश में जहाज उड़ रहा था तो श्रील प्रभुपाद ने हमको बोला ठीक है अभी मेरा हो गया आप लोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं आप लोग. So as I started to grab Prabhupada's plate, the deity plates, the stewardess said, "Do you want me to take care of that?" तो जब हम वो जब प्रभुपाद ने खा लिया तो फिर वो ना जब हम प्लेट से हटा रहे थे प्रभुपाद के सामने से तो इतने में जो वहाँ पे जो विमान की जो परिचारिका थी उसने बोला हमको कि आपकी मैं सहायता कर सकती हूँ क्या. So I wasn't thinking so much, and I thought I was very happy. I said, "Yes, you can take the plate." So she takes the plates. और मैंने क्योंकि मैं तो भी बहुत ही एकदम कुछ अलग ही उसमें मैं भी सोच रहा बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी तो मैंने फिर उनको बोल दिया ठीक है आप है ना परिचारिका को बोला आप है ना ले सकते हैं जो भी आपको प्लेट ले यहाँ से उठाना होता है तो वो उठाने लगी प्लेट सब. So Prabhupada, he didn't say anything. He's just watching, and she takes the plates away. तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला वो जस्ट उसको देख रहे थे और सीधा प्रभुपाद को कुछ मतलब उन्होंने देखा कि वो भी अपने कर रही है कुछ सेवा तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला प्रभुपाद ने. So finally the plane lands in Melbourne. इसके बाद जब 2 घंटा हो गया और मेलबर्न में जहाज उतर गया. And
course, we're in first class, so we're getting off very quickly off the plane. क्योंकि हम लोग क्योंकि प्रथम उसमें दर्जे में थे, प्रथम दर्जे में होने के कारण हमको सबसे पहले हम क्योंकि बाहर आ गए, बहुत जल्दी ही बाहर आ गए हम लोग प्रथम दर्जे में होने के कारण. So then as we get to the door of the plane, and the woman, the stewardess, she hands me the bag with Prabhupada's plates, the deity plates in the bag. Everything's all washed. हम जैसे ही वहां दरवाजे तक पहुंचे थे, अभी जहाज के रास्ते में पीछे से उसने हाथ मेरे को बोल के हाथ लगाई और मेरे को बोला, देखो ये आपकी प्लेट आप ले लो. उसने फिर उसमें एक थैली में वो सब पूरी धोई हुई, अच्छे ढंग से धोई प्लेट मेरे को थमा दी उन्होंने. So I'm still not thinking clearly. तो मैं अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ. So she hands me the bag with the washed plates, and Prabhupada looks at me. He said, "Where's the prasadam?" तो इसके बाद जब उसने मेरे को प्लेट सब डाल के थैली में मेरे हाथ में पकड़ा दी, तो श्री प्रभुपाद मेरी तरफ देख के बोलते हैं, प्रसादम किधर है? And that was the last thing he said to me. और वो तो समझ लो ये आखिरी जो चीज जो मुझे बोला प्रभुपाद ने. He looked at me. He was so upset that I let this woman take the plates, wash the plates, take the prasadam, and threw it away, the Maha prasadam. तो तब मेरे को समझ में आई बात कि ये जो है ना, प्रभुपाद क्यों ऐसा कह रहे हैं. प्रभुपाद ने बोला कि जो वहां पे जो उसमें प्लेट में जो था प्रसाद, उन्होंने सब फेंक दिया है और फेंक के उन्होंने प्लेट साफ करके हमको दे दी. इसलिए श्रील प्रभुपाद पूछे, महाप्रसाद है किधर? He just looked at me and he shook his head as we walked off the plane. और उन्होंने जस्ट मेरी तरफ देखा और अपना सर ऐसे हिलाया उन्होंने, और फिर हम जहाज के बाहर आ गए. हम Different times, sometimes Prabhupada would yell at me if I did something wrong. तो अलग अलग जगह पे है ना, प्रभुपाद है ना मेरे को हमेशा संकेत देते थे कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलत हो रहा हूँ मैं. But just seeing his face when he looked at me and said that was louder than any amount of chastisement. सिर्फ उनके मेरी तरफ देखने मात्र से और सर ऐसा हिलाने मात्र से ऐसा लगा जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से किया उन्होंने, लेकिन बहुत ज्यादा मेरे को उन्होंने ऐसे दंड जैसा जैसे मिल गया मुझे. This is what it means to be Krishna conscious. We always have to be attentive to what we're doing. ये सीखा बोलते हम कृष्ण भावना में रहते, मतलब हमें हमेशा ही हमें सावधान रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. And Prabhupada, he would always, when he would see the devotees taking prasadam, he would say, "Are you going to eat all of that?" तो श्रील प्रभुपाद हमेशा फिर ऐसे हमको बोलते थे कि जब प्रसाद छोड़ते थे प्लेट में, आपके पूरा प्रसाद खा जाएंगे ये? In those days, we were young. We would eat lots and lots of prasadam. Our plates would be full with prasadam. तो उस समय में हम है ना यंग थे, बहुत जवान थे, तो हम सबसे आखिरी में ही खाते थे और हमारी प्लेट पूरी भरी रहती थी प्रसाद से. So he would say, "Are you going to eat all of that?" तो पूछते थे हमसे कि क्या सब आप खा लेंगे इतना सारा? And then he'd say, "You can take as much as you want, but whatever you take, you must finish." इसलिए उन्होंने जितना हो सके आप जितना खा सकते खाइए, लेकिन आगे से अभी आप उतना ही लेना चाहिए जितना आप खा सकते हो. So Krishna prasadam, very, very special. तो कृष्ण का जो प्रसाद है बहुत बहुत विशेष होता है. And I always saw Prabhupada, he would always honor prasadam very nicely when he took prasadam. और मैंने देखा श्रील प्रभुपाद को जब भी प्रसाद ग्रहण करते थे बहुत ही अच्छे ढंग से उसका सम्मान के साथ प्रसाद ग्रहण करते थे. And for most all the time, he always took prasadam alone. He never spoke to anyone. He would just honor prasadam, Krishna prasadam. तो हमेशा मैं उनको देखता कि जब भी प्रसाद खाते थे उसी में प्रसाद खाने में लीन होते थे और कभी किसी से कोई बातचीत कोई वार्तालाप नहीं करते थे, चुपचाप बैठ के प्रसाद खाते थे. So this was our training when we cooked. When we cooked for the deities, we have that meditation very nicely that we're cooking for Krishna, and everything done in first class way.
इसलिए जब भी हम प्रसाद बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे ढंग से बनाना चाहिए और नंबर 1 तरीके से बनाना चाहिए, और हम क्या सोचते हैं वो भी हमें सावधान रहना चाहिए, हमारे विचार क्या आ रहे हैं प्रसाद बनाने के टाइम में। So we go for another 15 minutes or so, Prabhu? Yes? We can have, if there's some questions. Prabhuji, you have lot of time. Don't worry, Prabhuji. We are with you. Okay. We have just started getting the nectar. Just starting? All right. So while traveling with Prabhupada, I was giving class the other day saying how often Prabhupada he would take care of his disciples. तो मैं जब एक जगह मैं कक्षा दे रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि प्रभुपाद कैसे अपने शिष्यों का कैसे देखरेख करते थे, सब पूछा किसी ने। So now this was 1975 and Prabhupada's in Mayapur for big Purnima festival. तो ये है ना, तब की बात है जब 1975 में जब बहुत बड़ा त्योहार हो रहा था, तब हम श्रील प्रभुपाद के साथ में थे, तब की बात है ये। There were 500 devotees had come to this festival from all over the world, all over the West, Europe and America, South America. और ये जो मायापुर में जो हम बहुत बड़ा त्योहार करने जा रहे थे, उसमें 500 भक्त आए थे पूरे विश्व से, अलग अलग अमेरिका से आए थे, यूरोप से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से, सब जगह से आए थे वो। So you can imagine that time, just like now, tickets were like $1,000 to come to India to attend the festival. तो आप सोच सकते हैं उस टाइम में भी जैसे अभी आज के से $1,000 कम से कम लगता है अगर आपको मायापुर में आना है, पश्चिम जगत से, कोई अमेरिका के, यूरोप से, तो $1,000 जाता है हमको भारत में आने का। And Prabhupada, he encouraged the leaders. He said that everyone should come to the festival, Guru Purnima festival. तो श्रील प्रभुपाद हमेशा सबको प्रोत्साहित करते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो भक्त हैं, ये जो हम त्योहार करते हैं उसमें सब उपस्थित रहना चाहिए। So even Prabhupada's secretary at the time, he said, Prabhupada, it costs so much money for all these devotees to come to the festival. तो फिर उनके जो सचिव थे, प्रभुपाद के जो सेवक थे, उन्होंने एक दिन बोल ही दिया कि प्रभुपाद, इतना दूर से यहाँ तक आने में बहुत पैसा जाता है, बहुत पैसा खर्च होता है यहाँ तक आने के लिए। He said it costs hundreds of thousands of dollars for all the devotees to fly from all over the world to come to the festival. तो इसलिए पूरे विश्व से अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से आने में कई लाखों डॉलर वो खर्च हो जाते हैं इंडिया में, भारत में मायापुर में आने के लिए। This was Prabhupada's secretary, Brahmananda. ये प्रभुपाद के जो सेवक थे ब्रह्मानंद, उनका ये जो है, उन्होंने ऐसा बोला था। So those of you know Brahmananda was a very big devotee. जो लोग जानते ब्रह्मानंद के, तो वो बहुत ही विशाल काय था उनका शरीर, ब्रह्मानंद का। So standing on the veranda at Mayapur, looking at so many hundreds of devotees. तो हमने देखा कि मायापुर में बहुत सारे भक्त वहां पे इकट्ठा हुए, बहुत सारे भक्त आए हुए थे त्योहार में। And Prabhupada looked at Brahmananda. He said, how much does it cost to feed you in this lifetime? तो how much the cost of? To feed. How much does it cost to feed you in this lifetime? तो अगर आपको इस जीवन में आपको खिलाने के लिए कि पूरा जीवन भर खिलाते रहें तो कितना खर्चा होगा, ऐसा पूछते हैं प्रभुपाद अपने जो सेवक थे उनके, ब्रह्मानंद को। Oh, Brahmananda laughed. He said, Prabhupada, it cost a lot. उन्होंने बहुत जोर से हंस के बोला, अरे बहुत खर्चा हो जाता है खाने पीने में भी। He said, yes, but you must eat. लेकिन खर्चा हो कुछ भी हो, लेकिन आपको खाना तो पड़ेगा। He said, and the devotees must come to the festival. Never mind what the cost is. He said, devotees come to the festival. तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसका कितना खर्चा हो जाता है, लेकिन जितने भक्त उनको आना आवश्यक है, यहाँ पे त्योहारों में आना चाहिए उनको।
times, Prabhupada would say, Krishna is not a poor man. He can feed everyone, no problem. तो प्रभुपाद बोलते थे कि कृष्णा है ना गरीब नहीं है, वो है ना सबको खिला सकते हैं, आप चिंता मत करो, सबको पैसा देंगे, आ सकते हैं भक्त लोग. And he said, every temple, Prabhupada had his secretary write a letter to all the temples. इसलिए जो प्रभुपाद के जो सचिव उनको बोला प्रभुपाद ने कि जितने भी मंदिर हैं हमारे सब में ना चिट्ठी लिखो यहाँ आने के लिए प्रोग्राम में उनको. And he said to them that Krishna is not a poor man. और उन्होंने उसमें लिखा है चिट्ठी में कि कृष्ण गरीब नहीं है. He said, and Radharani, she's in charge of the kitchen. और जो राधा रानी है वो है ना जो रसोई घर की जो प्रमुख है, रसोई घर चलाती है वो. He said, every temple should have a stock of prasadam for guests. तो हर मंदिर में है ना इतना प्रसाद होना चाहिए कि कोई भी मेहमान आए तो वो उसको अच्छे ढंग से खिला सके हम. He said in the letter that there should be enough prasadam for 25 guests at all times. तो बोले इतना पर्याप्त मात्रा में प्रसाद होना चाहिए हमेशा मंदिर में कि 25 अगर मेहमान भी आ जाएं मंदिर में तो हम आराम से इसको खिला सकते हैं हम वो सब मेहमानों को. Yeah, he said there should be puris, sabji, halava. He said it should always be there. And when it's gone, then you make for 25 more. तो इसलिए जो सब उसमें जो बस सब खाने का उसमें आइटम होना चाहिए, जैसे कि पूरी है, सब्जी है, हलवा, मिठाई है, सब उसमें आइटम होना. और जब वो 25 लोग खा के जाएं तो फिर हम 25 लोग वापस फिर हमें बनाना चाहिए पूरियां. और And then he said at the end of the day, whatever is left, you can distribute to the devotees or you can sell it. He said, but always prasadam should be there for guests. तो जब सब अंत में क्या करने का, ये जो प्रसादम जो बचता है वो सब देवटी में बांटो, और भी ज्यादा है तो उसको आप बेच सकते हैं प्रसाद को. So in traveling with Prabhupada in his room, we always had a jar with sweets in it. इसलिए जब हम प्रभुपाद के जब भी यात्रा करते थे तो उनके पास एक जार था और जार में हमेशा भरा हुआ रहता रहा, वो मिठाई से भरा ही रहता रहा हमेशा. So no one left Prabhupada's room without getting a sweet before they left. तो इसलिए जब भी जहाँ पे भी जब प्रभुपाद जाते थे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसको है ना मिठाई प्रसाद नहीं मिला हो प्रभुपाद के हाथ से. So at this particular festival, Gaur Purnima festival in Mayapur, there was one sannyasi. इसलिए यहाँ पे जो विशेष जो त्योहार था एक्चुअली मायापुर में, और वहाँ पे एक सन्यासी थे. Well, there were many sannyasis, but there was one sannyasi and he wanted to get something from Prabhupada. तो बहुत सारे जबकि वहाँ पे सन्यासी थे, लेकिन एक जो विशेष सन्यासी थे वो सिर्फ श्रील प्रभुपाद के हाथ से कुछ लेना चाहते थे. He decided that he wanted Prabhupada's chadar that he wore for years and years, his wool chadar. तो इसलिए वो है ना चाहते थे श्रील प्रभुपाद से विशेष भेंट कि वो है उनकी जो चादर जो कि कई सालों से प्रभुपाद पहन रहे थे, उससे उसको लेना चाहते थे प्रभुपाद की चादर को वो. So he devised one plan, thinking that by buying this brand new chadar for Prabhupada, I'll get his old chadar. तो इसलिए उसने ऐसा मतलब योजना बनाई कि जैसे कि ये प्रभुपाद का ये जो पुराना जो हो चुका है चादर ये मैं ले लूं और उसके बदले में प्रभुपाद को बहुत बढ़िया एक नया अच्छा जो चादर उनको भेंट में उपहार में दिया जाए उनको. So he had a very good plan. He didn't just buy a wool chadar. He bought one of the most expensive chadars that you could find. तो उसने कोई ऐसी साधारण चादर नहीं खरीदी, उन्होंने बहुत ज्यादा महंगी, सबसे ज्यादा महंगी बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा महंगी और बहुत अच्छा क्वालिटी की जो चादर उन्होंने खरीदा उन्होंने. So this chadar was cashmere, was santush. It was very special cashmere that you could only get from one place in the Himalayas. तो इसलिए जो मतलब ये जो चादर जो ऐसा है कि जो हिमालय से जब एक जगह से दूसरी जगह की ठंडी में जाते हैं तो उस समय में भी अगर वो पहन के जाएंगे ठंडी नहीं लगेगी, ऐसा कोई इतना अच्छा मतलब उसका क्वालिटी था चादर का, इतना बढ़िया गर्म चादर था वो. And it was all hand embroidered.
और इसमें हाथ से पूरा उसकी जो कलाकारी की गई थी, उसमें जो कलाकृति की गई थी वो हाथ से बहुत मेहनत के साथ किया गया था। So these chadars, they were famous because they were very thin and very light, and you could pass the whole chadar through a ring. It was so fine. तो ये है ना बहुत ही ज्यादा महंगी थी, और ये चादर ऐसा इसका विशेषता थी कि उसमें मतलब एक विशेष टाइप का उसमें जो सिलाई कढ़ाई वगैरह की गई थी, और उसमें एक विशेष ऐसी विशेषता था कि उसमें इतना खूबसूरत दिखने लगे था कि उसमें ऐसा उसमें मतलब कलाकारी की गई थी वो। So the sannyasi thought for sure that he would give Prabhupada this chadar, cost hundreds of dollars, and Prabhupada would give him his old chadar. तो इसलिए उन्होंने ये योजना बना ली कि ये प्रभुपाद को इतनी महंगी वाली जो चादर जिसमें कई मतलब कई $100-200-400 ऐसा की होगी, वो उसको दे देगा और उसके बदले में पुराना चादर ले लेगा उनसे। So he came into Prabhupada's sitting room in Mayapur, and he put it down on the table in front of Prabhupada. और वो जब मायापुर में प्रभुपाद के रूम में आए उन्होंने, और अपनी चादर को टेबल के सामने प्रभुपाद के समक्ष रख दिया वो चादर को उन्होंने। And of course he said, Prabhupada, I've got this chadar for you. उन्होंने श्रील प्रभुपाद, मैंने ये जो चादर है आपके लिए मैं लेके आया हूँ। So Prabhupada looking at it, and he starts to tell a story. तो श्रील प्रभुपाद है ना वो चादर की तरफ काफी टाइम तक देखते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने एक कहानी है ना आरंभ कर दिया बोलना उन्होंने चादर देखते देखते। And he said, when I was a young boy, my father, one of his friends, he would deal exclusively in these kinds of chadars. तो उन्होंने बोला जब मैं छोटा था, मुझे याद है जब बचपन में मेरे जो पिताजी के एक मित्र थे, पिताजी के मित्र ये इसी का ही व्यापार करते थे। वो ये इस टाइप की जो चादर है जो जिसमें ये लगी हुई थी सब कढ़ाई सिलाई कढ़ाई जो की गई थी, बहुत कलाकारी के साथ बहुत खूबसूरत कढ़ाई वाली अलग अलग विभिन्न प्रकार की चादरें वो लेके आते थे वो। So then Prabhupada said, so when I was a young boy, he said my father's friend, he would give them one of these chadars every year for me. He said every year I would get such a chadar. तो इसलिए हर साल जब भी वो आते थे तो वो है ना श्रील प्रभुपाद के पिताजी को वो चादर देके जाते थे, और वो चादर मैं इकट्ठा करते जाता था एक एक करके। So of course the devotee's plan didn't work. Prabhupada was not impressed. He took the chadar and he just put it behind him on the shelf. तो इससे जो भक्तों का जो ये थी योजना थी श्रील प्रभुपाद को ये हम देंगे, तो उन्होंने वो उनको इतना सफल नहीं हो पाए कि उन्होंने सच की चादर उठाया और पीछे रख दिया उन्होंने ऐसे जाके। By this time I had been with Prabhupada for 2 years. मैं अभी तक मेरे साथ को प्रभुपाद के साथ में 2 वर्ष बीत चुके थे उनके साथ रहते रहते। So I was never thinking I want this from Prabhupada, I want that from Prabhupada. But now he got my desire. I decided I wanted Prabhupada's chadar. तो लेकिन क्योंकि कभी भी मैं प्रभुपाद से कभी कोई अपेक्षा नहीं की थी मैंने कि मुझे को ये चाहिए प्रभुपाद से वो चाहिए, लेकिन अभी मेरी एक इच्छा जागृत हो गई मेरे हृदय में कि मुझे ये चादर चाहिए प्रभुपाद की। But I also had to come up with a plan. इससे मैं भी एक योजना बनाई। So after being in Mayapur for a week, Prabhupada was going to Vrindavan. तो एक सप्ताह जो रहने के बाद मायापुर में अभी श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन जाने का योजना बनाई उन्होंने। So I realized when I get to Vrindavan, I'll have somebody help me and I'm going to get Prabhupada's chadar. तो इसलिए मैंने ये योजना जैसे बनाई थी कि प्रभुपाद के जाने के पहले ही, यानी तो वृंदावन जाने के मैं किसी भक्त की सहायता से चादर कैसे भी मुझे मिल जाए। So of course, in Krishna Balaram Mandir, 1975, there's no stores anywhere. You can't even buy a chadar in Vrindavan, a wool chadar. उस टाइम 1975 में वहां पे कोई भी ऐसा कोई जगह स्थान नहीं था जहां पे ये चादर आप खरीद सकते। वृंदावन में कुछ भी ऐसा कोई दुकान नहीं थी जहां ये चादर बेची जाती हो। So I
thought I had a good plan because I told one devotee girl, when you go to Delhi, you buy a charter just like Prabhupada's. इसलिए मैंने एक भक्त को बोला कि आप है ना जब दिल्ली में जब उतरेंगे ना तो वहां पे है ना प्रभुपाद की जैसी एक और चादर आप खरीद लेना वहां दिल्ली में आप. That charter was a Lohi brand, Lohi, Lohi gray wool charter. I said, you buy one just like that for me. तो उन्होंने बोला कि जैसे प्रभुपाद दिखते हैं वैसे की वैसे ही मेरे को है ना चादर मेरे लिए खरीदो आप, ठीक है ना, और कोई इससे अलग नहीं होना चाहिए. So every week they would go to Delhi to get some supplies. So she comes back from Delhi and she had bought this charter. It was just a couple hundred rupees. वो हम हर हफ्ते क्योंकि दिल्ली में सामान लेने आते थे तो उस टाइम वहाँ कुछ मिलता नहीं था वृंदावन में, तो इसलिए वो फिर है ना वहां से फिर एक दिन ये चादर खरीद के लाए वो. So now I had a charter exactly like Prabhupada's, but it was brand new. तो मेरे पास अभी चादर आ गई मेरे पास भी बिल्कुल जैसे प्रभुपाद चादर सेम वैसे की वैसी, हाँ, लेकिन फर्क ये था कि वो एकदम नया था बिल्कुल. So that afternoon I went into Prabhupada's room and I offered obeisances. इसके बाद मैं जब श्रील प्रभुपाद के पास गया और प्रभुपाद को मैंने दंड प्रणाम किया. And I have this pretty new charter in my hands. और मेरे हाथ में ये जो नया वाला जो चादर जो मेरे लिए लेके आए थे वो था मेरे हाथ में. And Prabhupada's looking at me. प्रभुपाद मेरी तरफ देख रहे थे. He goes, yes. उन्होंने पूछा यस बोलिए. I said, Prabhupada, I just bought this charter for myself. तो मैंने ना श्रील प्रभुपाद को बताया कि देखिए चादर है ना मेरे लिए मैंने खरीदा है. And he's just smiling, then yes. और वो जस्ट मुस्कुरा दिए प्रभुपाद. I said, but I decided you're my spiritual master. I want to give it to you. लेकिन प्रभुपाद मैंने ये निर्णय लिया है क्योंकि आप मेरे आध्यात्मिक गुरु है तो मैंने आपको ये देना चाहता हूँ चादर. Prabhupada smiled. He looked at me. He said, I have a charter. He pointed right behind him. The charter I wanted was right behind his head. He said, I have a charter. इसलिए प्रभुपाद ने सीधा बोला मेरे पास हम है चादर, देखो देखो पीछे से हाथ करके देखो है चादर मेरे पास. I said, yes, but Prabhupada, this charter is new. I said, so I thought I should give it to you. मैंने कहा प्रभुपाद बोला नहीं प्रभुपाद ये सही बात है लेकिन ये मैं एक्चुअली चादर आपके लिए विशेष रूप से आपको देना चाहता हूँ. So he said, no. He said, it's okay. He said, you need a charter. It's getting cold out. You should have a charter. You keep it. तो श्रील प्रभुपाद ने क्योंकि ठंडी का समय आ रहा है बिल्कुल भी सामने एकदम, तो अभी आप ने चादर अपने पास ही रखिए, आपको काम है कि ठंडी के समय में. So then I realized he wasn't going to give in. So I said, Prabhupada, I would much rather have your charter. तो मैंने कहा श्रील प्रभुपाद मैं ज्यादा खुश होऊंगा अगर मुझे आपकी चादर मिल जाए तो. So then Prabhupada laughed. He said, okay. So then he took the new charter and he gave me his old charter. श्रील प्रभुपाद एकदम मुस्कुरा दिए और हंस दिए. अच्छा ठीक है फिर बोला. उन्होंने जो है ना चादर जो है पुरानी चादर मुझे दे दी और नया चादर ले लिया उन्होंने. So this is the charter. This is the charter that Prabhupada gave me. ये चादर है जो मुझे प्रभुपाद ने दिया. जय जय. हरि बोल. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल. प्रभुपाद चादर हरण लीला की जय. हरि बोल हरि बोल. This charter, Prabhupada had this charter for over 5 years. It went around the world with him many times. This charter is very special. ये 5 वर्ष तक प्रभुपाद ने इसको पहना था और कई पूरे जगत में जब भ्रमण करते तब पहन के जाते थे ये 5 साल तक. We'll put it on your heads here. Everybody can take it on their head. इसलिए सब लोग सर के ऊपर स्पर्श करिए अपने सर पे ये चादर का. So Prabhupada told me, he said, when the spiritual master is present, he said, you can use the items that he gives you. जब श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जब उनके आध्यात्मिक गुरु किसी के अगर है इस जगत में भौतिक जगत में
तो आप उनके अगर आपका आज्ञा है तो आप उनका कोई भी जो चीज है उसका इस्तेमाल उपयोग कर सकते हैं उनके आज्ञा से. He said, but once he leaves, then everything that was his, it all becomes worshipable. लेकिन जैसे ही वो इस जगत से जब छोड़ के जाते जगत को तो उनकी जो भी चीजें हैं वो हमें उनकी पूजा करना चाहिए. Yes. So now this chadar is always on the altar. वैसे मैं ये चादर है ये हमेशा जो है हमारे मंदिर में रखता हूँ. मेरे घर के जो मंदिर है उसमें रखता हूँ. अल्टर में रखता हूँ मैं. And somehow or other, if I get to come to Dubai sometime, I'll bring it with me so you can all offer your respects to Prabhupada's chadar. तो मैं कभी अगर मेरे को अवसर मिलता है दुबई में आने का तो ये चादर मैं साथ में लेके आऊंगा तो आप लोग उसको अपना सम्मान प्रदर्शित कर सकते हैं. अपना उसको दंडो प्रणाम कर सकते हैं चादर को. So Prabhupada, of course, he's given all of us so much. He's given us his disciples, he's given his books, he's giving us deities all over the world. This is all by the mercy of Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद ने हमारे पूरे जगत को देखा जाए तो अर्च वगैरह दिए हमने. उन्होंने अच्छे मंदिर दिए उन्होंने. इसके अलावा हमें माला जाप करने के लिए बताया, सेवा कैसे करने का, कैसे भक्ति, बहुत कुछ दिया प्रभुपाद ने हम लोगों को. And I see that here today there's over 100 of you who have all joined in to hear about Srila Prabhupada today. So I'm very happy that I got to be with all of you. And I'm sure Prabhu will arrange it again sometime for future. Yeah, sure, Prabhuji. This is just a starter. I mean, I was trying to get you for so many days, but you are so busy. You know, like somebody, Shivam Prabhu was trying. Sometimes I have on the 3rd, I have 2 classes so far on the 3rd, and somebody else once. But anyway, this is very wonderful facility. I'm very happy to share this time with all of you. There are nearly 300 devotees plus watching you, Prabhuji. There are nearly 300 plus. Hare Krishna. They are the families. May you all have the blessings of Srila Prabhupada. You just follow his instructions and try to continue helping him in this Krishna consciousness movement, and our lives will all be successful. हरे कृष्ण. तो मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग श्रील प्रभुपाद की कृपा सबके ऊपर बरसती रहे, सबके ऊपर कृपा बनी रहे प्रभुपाद की, और उनका जो आंदोलन है प्रभुपाद कार्य इसको बढ़ाने में सहायता करते रहिए, सहायता बढ़ाने में करते रहिए उनकी. और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें सभी लोग. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Prabhuji, just a question. If you have time, I would like to give darshan of some devotees, residents. If you can visit them on video. Yes. You know? Yes. If you have time. So I'm very some, happy. at least some of them. No? To see everybody's home, everybody's devotional homes. Very, very nice. Okay, Govinda Prabhuji, can you spotlight your this thing quickly? Govinda Prabhuji, are there? We'll do in 2 minutes. I'll come. Yeah, okay, Hemanga Prabhuji, because we have. Yes. Okay, you can show your deities, please. Yeah, I will just. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, Hare Krishna. Actually, deity देखनी है किधर समझ? बोलो. It'll be really fast, everybody. हाँ. We don't have much time. जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य नरसिंहदेव मायापुर नरसिंहदेव राधा माधव मायापुर और राधा मदन मोहन खारगर इस्कॉन खारगर राधा मदन मोहन जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य and Radha Madhav Mayapur and this Pune NVCC Pune small deities and Mayapur Narasimhadev. Hare Krishna. Jai Jagannath. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, I'm taking you to my place. Hare Krishna, this is my residence. God, Nitai Gaur Sundar and Giri Govardhan is there from Vrindavan. Aha. Jai Giri Govardhan. Thank you, Prabhuji. Thank you Hare for Hare Krishna. Hare Krishna. We are fortunate to have. I could. Hare Krishna Prabhuji. Pranam Prabhuji. Don't pranam. Yeah, quickly.
Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Jai. It's Thank you. Hare Bol, Hare Bol, Hare Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji, visiting our house. Bol, Hare Bol. Thank you, Prabhu. Paramahansa Prabhu is there. Ramakrishna Prabhuji, Paramahansa Prabhu, Achyuta Prabhu. Excellent. Hare Krishna, Prabhu. Yeah, take it up. Thank you, Prabhuji. Paramahansa Prabhu. Hare Bol. Hare Bol, Hare Bol, Hare Radha Bol. Keshav Prabhu. Radha Keshav Prabhu. Jagannath, Baldev, Subhadra, Laddu Gopal. Yes. Gopal. Murli Vadan Prabhu is there. Or Seva Padma Mataji. Hare Krishna. Jai Jagannath. Jai Gurnitai. जय जगन्नाथ गौर नेताई की जय. हरि बोल. Jai Haribo. Did I show them my altar? Not today. गोविंदा प्रभु. हरि बोल. Hare Krishna. Haribo. गौर नेताई लड्डू गोपाल. जय सुधरामई. Jai Jagannath. Jagannath making many appearances there in Dubai. हरि बोल. Haribo. शिल प्रभुपाद की जय. Srila Prabhupada. This is actually in Sharjah, Prabhuji. Sharjah, like next to Dubai. We are Emirate next to Dubai. I see. It's called Shamadesh. Yeah. Very nice. Radha Keshav Prabhu, you are there. Ramakrishna Thank you. Prabhu. They're showing me all their altars. Murli Vadan Prabhu or Seva Padma Ji. I mean, I am just giving it to the group heads so that everybody gets benefit to them. Yes, Prabhu. Ajendra Prabhu. Yes, Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, quickly, because Tamshai. Prabhuji, I'm not able to locate name because login names are different actually. Ajendra Prabhu, he just said Hare Krishna. Yes. Yes, Hare this is हरि बोल. हरि बोल. Wonderful. जय जगन्नाथ बलदेव सुधरामई गौर नेताई की जय. Jai Jagannath. Hare Swastik Chaitanya Prabhu and they are same. I think. Seva Padma Mataji, Shruti Mataji, Murli Vadan Prabhu. हरि बोल. सस्तिक प्रभु. हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Hare Krishna. गोकुल प्रभु दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. बहुत दिन बाद आपका Dandavat pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Bhakta Okay. Okay. Yes, Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Srutakirti Prabhuji. Thank you for visiting us. हरि और पावनी माता जी. हरि बोल. Right, very good. Okay. Okay. Okay, thank you very much. There is one question which has come from one Mataji that is there on the chat. 1 second. There's one question. It is from Kiarani. Do you want me to read it out, Prabhuji? Kiarani. I think I read it. Okay. Fine. From Kiarani. Gurangi. There is one Kiarani Mataji also asking a question. Oh, okay. What is that? It is asking how can we also maintain the ecstatic service mood and dedicate our entire life just for the service of Gurudev and Srila Prabhupada? Please kindly enlighten your insignificant servant Kiarani. There are many ways. Many ways of reading Prabhupada's books, understanding what Prabhupada has given us. He tells us both sides. We see Prabhupada always would express that this material world is not a nice place. He made many predictions. Oh, I have to let you talk. Go ahead. हाँ, तो इससे देखा जाए तो अभी एक प्रश्न पूछा गया खैरानी माता जी ने कि हम कैसे अपना उत्साह जो है ना हमेशा बनाए रख सकते हैं अपनी सेवा में और हमेशा आनंदित रह सकते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसे बहुत सारे ऐसे देखा जाए तो रास्ते प्रभु ने बताया बहुत सारे तरीकों से हम कर सकते हैं। एक तो यह है कि श्रील प्रभुपाद की हमेशा हम पुस्तकों को हमें अध्ययन करते रहना चाहिए और भक्तों का संग करते रहना चाहिए। यस प्रभु। So Prabhupada would say, we have to become serious in Krishna consciousness.
तो हमें बहुत ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता है। कृष्ण भावना में गंभीरता बहुत आवश्यक है। Well, Prabhupada would say, until one realizes that this material world is a very nasty place, there's no question of becoming Krishna conscious. One has to understand this material world is a horrible place. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक कि किसी को ये मन में, ये दिमाग में बात नहीं घुसती है, जब तक कि ये जो भौतिक जगत है ये एकदम दुखों से भरा हुआ और एकदम गंदा जगह है ये, और यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना है, हमको नहीं रहना है यहाँ पे, ये दिमाग में घुसेगा तब तक आप भक्ति अच्छे ढंग से कर नहीं पाएंगे, जब तक दिमाग में ये बात नहीं घुसेगी। तो Prabhupada's given us so many books to help us understand. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारी पुस्तक हमें दी है ये चीज को समझने के लिए। Then of course you have to chant Hare Krishna for purification. ठीक है, लेकिन हमें जो इसके साथ साथ हमें हरे कृष्ण मंत्र भी जाप करना आवश्यक है अपने शुद्धिकरण के लिए। So then of course we take prasadam. We've been talking so much about prasadam. तो हमें प्रसाद भी लेना आवश्यक है, जैसे हम इतना सारा आज पूरा प्रसाद के बारे में बहुत कुछ बात की है हमने आज। And then you have to take good association. So all of these things, they help us become strong. और हमें बहुत अच्छा एक संग भी चाहिए, भक्तों का संग, तो अच्छे भक्तों का संग, तो ये सब चीजें मिलके हमें बहुत मजबूत बनाएगा हमें भक्ति में। And this way we offer everything we do to Krishna and then we become happy. और इस तरह से हम जो भी कुछ करते हैं हम कृष्ण को उसको समर्पित करते रहना चाहिए और इस तरह से हम खुश रहेंगे। Just like we've been here in Vrindavan now for almost 2 years. तो मैं यहाँ वृंदावन में हूँ, करीबन मुझे 2 साल हो चुके हैं यहाँ वृंदावन में, बिता रहा हूँ, 2 साल से मैं हूँ यहाँ पे। And we're very fortunate. Everything we want is right here at Krishna Balaram Mandir. और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें जो कुछ भी जिस चीज की हमें आवश्यकता है वो सब यहाँ में कृष्ण बलराम मंदिर में उपस्थित है, वो मौजूद है वो चीज। Serve the deities here. We take Prashadam here. Prabhupada Samadhi is here. Everything is right here. तो हमें जो अर्च वगैरह चाहिए था, हमें अर्च वगैरह सामने दिखता है डेली हमें कृष्ण बलराम का, और हमें श्रील प्रभुपाद की समाधियां है उनका भी दर्शन होता रहता है, तो हमें प्रसाद मिलता है, तो हमें सब कुछ यहाँ पे है जो हमें चीज की आवश्यकता, सब चीज यहाँ पे उपस्थित है यहाँ पे। But just like when I started out, I was talking about nice families doing the kirtan in their home. Their temple, their home is a temple. Everyone's chanting. जैसे मैंने बता रहा था कि जैसे एक परिवार अभी मैंने देखा कि पूरा परिवार उनका गा रहा था, भजन कीर्तन कर रहा था, भगवान का नाम ले रहा था, तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छा परिवार है। The mother's playing harmonium, doing bhajan. The son is playing mridanga. Everyone is engaged in Krishna's service. Oh, this is the secret. तो ये है जो दिखाए तो रहस्य है ये खुश रहने का कि कोई मृदंगा बजा रहा था उनके घर में, कोई हारमोनियम बजा रहा, कोई गा रहा था, तो सभी लोग भगवान कृष्ण सेवा में व्यस्त थे। Prabhupada called it the routine program, to follow the routine program, temple program. श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि प्रोग्राम होता है मंदिर में, जो भी प्रोग्राम होता है उसको हमें आवश्यक रूप से हमें उसको उसमें उपस्थित रहना है। Hare Krishna. हरे कृष्णा। If any devotee has got any question, quickly they can raise their hand before Prabhuji leaves, if they have any question. All right. Hare Krishna, everyone. Thank you again, Prabhuji. And I also want to recommend your book. What is the difficulty which you have written? Which is a wonderful book. I could never put it down. Everybody should read this. As a copy, Prabhuji launched it in 2003, I think, in Radha Ashtami Day. What is the difficulty? Yes. Yeah, it's great nectar. I mean, very wonderful book. Thank you, Prabhu. Thank you. Please accept our humble obeisance at your lotus feet again from all of us in Shamadesh. Hare हरे कृष्णा हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Jai Shri Prabhupada ki jai. All those disciples. Thank you, Okay. Prabhu. Thank you. Hari Hari. हरि हरि बोल हरि।